So in the first news, strong economy has nations vying for Indian tourists. Still waiting for your US or Schengen visa and wondering if you will get it in time before Christmas and New Year? Well, how about countries like Thailand, Saudi Arabia, Australia, Turkey, Vietnam, or Sri Lanka? These are the countries who are banking on Indian travelers and they are trying to ease their entry into the mainland. According to a McKinsey report, the Indian globetrotters are set to soar given the relative economic prosperity and the propensity in Indians to travel international. If we follow the China's outbound trajectory, and we can compare our country with China because of the population and the per capita income, then by 2040 there will be 80 to 90 million trips a year from India. So in the next news, Air India to introduce more AI features by introducing a virtual agent called Maharaja. So Tata जो ओन करती है एयर इंडिया को, वो यूज कर रहे हैं जनरेटिव एआई को टू आंसर द कस्टमर क्वेरीज एंड दे हैव बीन आंसरिंग ओवर 6000 क्वेरीज पर डे. तो इसके अराउंड माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर ओपन एआई को यूज करके और फंक्शनैलिटीज ऐड किए जाने वाली हैं. तो आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि है कश्मीर से. कश्मीर में फ्रेश स्नोफॉल देखी गई है एंड इट हैज टर्न्ड हेवनली दिस टाइम. Kashmir was one of the most visited places in the country last year, and this time also it seems to be topping the chart. Kashmir is the skiing capital of India, and it is wooing travelers and adventure lovers from all over the world. It has been seen that upper reaches of the Kashmir Valley is also seeing snowfall, and the temperature has dipped because of that. In the next news, European Union shifts to digital visas for Schengen areas. Once it is in place, people applying for short stays in the Schengen area will upload their documents, data, electronic copies of the travel documents, and biometric information and pay the fee through an online platform. The shift towards digitalization of the visa process will do away with the need for applicants to get a sticker in their passport. Means that they do not need to have appointments at the consulates or the service providers office. I hope आपको ये न्यूज़ सुनने में मज़ा आ रहा है और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है about what's going on in the world. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ जिनको आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और आपको बताना है कि ये वीडियोस इंप्रूव कैसे किए जा सकते हैं या किस तरह से ये और इंटरेक्टिव बन सकते हैं या एनी आइडियाज दैट यू हैव अराउंड, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. नाउ इन द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, श्रीलंका टू थाईलैंड, टॉप ट्रैवल destinations that Indians can visit without a visa. Exploring the world becomes a lot easier when you don't have to worry about visa hassles. In the latest news, Indian and Taiwanese tourists have been given a waiver of visa from November 10 to May 2024. This move is in a bid to stimulate the tourism industry as a high season approaches. तो आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ. One visa for Gulf countries, just like Schengen visa. In an effort to boost tourism in the Gulf countries, the Gulf Cooperation Council at the 40th meeting of the Interior Ministers announced that they will have a unified tourist visa, just like Schengen visa, for the member states like Kuwait, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. If it's in place, then it will make way for more easier logistics. The next news item is on the impact of travel meta search on the travel industry. For travel industry, meta search engines have presented an opportunity for growth. Smaller hotels and airlines can reach the global audience without having an extensive marketing and distribution system. OTAs have allowed these small players to compete with the big players, leveling the playing field and driving competition. The growth can be attributed to the accessibility and convenience offered by such engines, which allow travelers to compare prices, read reviews, and book their travel with a few clicks. Basically, we are an OTA
एंड वी प्रोवाइड ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। तो अगर आपको अपना कोई ट्रिप प्लान करना है जिसमें आपको होटल्स बुक करने हैं, एयर टिकट्स चाहिए, साइट सीइंग का पैकेज चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, एंड बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। और अगर आपको माइस से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, मीटिंग्स, इंसेंटिव टूर्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट रेट्स। तो अगर आपको अच्छा लगा ये चैनल, आपको अच्छा लगा हमारा काम, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।